Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha He Krishna Karuna Sindho Deenabandha Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayine Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Pancha Tattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Janmadhyasya to anvayaditaratas Charthe subhigyan swarat Tene brahma hridaya adikavaye Muhyanti yat surayah Tejo vari mridam yatha vinimaya Yatra trisargo mrisha Dhamna svena sada nirasta kuhakam Satyam param dhimahi Narayanam namaskritya Naran chaiva narottamam Devim saraswatim vyasam Tato jayamudirayet Swasti astu vishvasya kalaha prasidatam Dhyayantu bhutani shivam mithodhya Manasya bhadram bhajatadadhokshaje Avishyatam no matirapya heituki आप सभी का स्वागत है। We welcome all of you to today's Bhagavad-Gita class. और हम अध्ययन कर रहे हैं We are studying 4th chapter, verse 22. और यहाँ पर प्रकरण है कर्मयोग का। Here the context is of Karma Yoga. पीछे के कई श्लोकों में भगवान ने In many verses earlier, किस प्रकार कर्म से बंधन में ना Bhagavan taught how to do karma and still not get bound by karma. He explained the science, and especially he said that one who gives up attachment to the fruits of karma and remains satisfied, whatever he obtains, such a person, he remains free from karma. Because earlier he had said that how to see akarma in karma. So there it is not just seeing akarma in karma, but also how to have the mentality of akarma, meaning how to remain free from the bondage of karma. So he is speaking about that here. In the previous verse also, he had said that one who gives up the parigraha, he works just for the maintenance of body. Such a person also remains free from karma. द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। Translation: content with whatever comes by the will of providence, having transcended all duality,
being free from jealousy, and composed in success and failure, that person is not bound, even though performing actions. तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। So, this is a very यहाँ पर important भगवान verse बताते हैं फिर because किस here प्रकार Bhagavan व्यक्ति says कर्म that करते how हुए भी a person, उसके बंधन में नहीं while फंसता, doing karma, बंधन नहीं also बन does जाता। not become ये bound नहीं कह रहे by हैं कि the वो कुछ karma. करेगा नहीं, Bhagavan doesn't लेकिन say करते that such हुए a भी person will not do anything, but while वो working उसके also, कर्म में लिप्त नहीं होता है। he does not become तो bound by the karma. सबसे पहली बात जो उन्होंने की है कि यदृच्छा So, लाभ first point that he says is यदृच्छा yadricha. शब्द का अर्थ होता है Yadricha word means प्रभु की इच्छा से whatever comes by the या ichha किसी of Bhagavan दैवीय इच्छा से आपको प्राप्त हो जाए, or some divine तो will, उसमें वास्तव में आपने उसकी meaning कोई योजना नहीं बनाई, we have not planned for it, लेकिन फिर भी आपको कुछ but प्राप्त still हो जाता है जिसका we कारण get something, बताना कठिन है। and it is उसको difficult to यदृच्छा trace बोलते हैं the संस्कृत or में, tell the यद्र का cause अर्थ है behind that. यदृच्छा। In Sanskrit, that is उसको called भगवत इच्छा yadricha. बोलते हैं, कभी कहते You हैं can भगवान say it द्वारा is कर्म ichha किया of है, Bhagavan. कुछ Some people फलों का say it बोध is से। by result of इसका previous मूल karma, कारण but पता लगाना the सामान्य व्यक्ति के लिए संभव for नहीं an है, ordinary इसको person, ढूंढ it के is देखना not चाहिए। possible to find the root cause of that. वास्तव So में that is देखा called जाए तो हम yadricha. यही सोचते हैं Actually, if कि you हम जो भी see प्राप्त कर रहे हैं whatever we are दूसरे के getting अनुसार in कर्म life, करके उसको प्राप्त करते हैं। we ऐसा think तो नहीं that करते we हैं are कि जो getting भावना it है, by our karma उसी that we भावना did से हम according to कार्य our करते wish. हैं, This is our general लेकिन किसी mentality, and we कारण से work हमारी with this इच्छा है mentality उसकी पूर्ति के that लिए if we want something, कुछ क्रिया then करते हैं, कर्म to करते हैं, satisfy our वो मिल wants, जाती we है तो हम perform सोचते हैं कि ये actions, हमको हमारी and when we get the result, इच्छा के अनुरूप जो कर्म किया then we उसका think that परिणाम whatever मिला, we did according to our ऐसा हम desire, we सोचते got हैं। the result of our लेकिन action. This वास्तव is how में we think. जो भी But फल actually, प्राप्त होता है, जिस किसी को भी कर्म whatever कहीं ना result कहीं जिस we परिस्थिति में भी फल achieve प्राप्त in होता any है situation, any person, उसके whatever पीछे he or अनेक she कारण gets, होते हैं, there are multiple factors ये behind that. केवल उसमें एक कारण We नहीं है। are not the only गीता reason के 18वें behind अध्याय getting में the भगवान result. 5 In कारण the 18th बताए हैं, chapter, Bhagavan will तो उनमें enumerate से एक हम 5 भी हैं factors, and we are one of the 5 और बाकी factors. 4 अलग कारण हैं। उसके And there are अलावा भी 4 और other कारण हैं, factors also. And पर then there are many वास्तव में other हमारा reasons कोई also. नियंत्रण नहीं है। And we do not have control over the जो other सुधी factors. जन हैं, जो So those who are wise, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो those who are बुद्धि व्यक्ति हैं, intelligent, जो समझते हैं कि सृष्टि कैसे चलती है, those who understand that विज्ञान how किस this प्रकार से world आता है, उनको देख functions करके ये and सोचते हैं कि जो how भी we होता है get वो the सब results of भगवान की इच्छा actions, से हो रहा है। they think that whatever एक बात तो हम जानते हैं is happening by कि the हमारे will of नियंत्रण Bhagavan. में Because at least we know विशेष this कुछ much है नहीं। that there is भगवान nothing जब भोजन much भी that करते we हैं तो can control. वो पचेगा Even when we नहीं eat food, पचेगा, whether that किस food will प्रकार get से भोजन digested हमारे or शरीर का no, पोषण करता है, how it इसका will कोई nourish our नियंत्रण नहीं। body, we do not have any भोजन हमारे control पेट over में that. जाता है, लेकिन हमारे Once the food enters the stomach, शरीर में जो करोड़ों कोशिकाएं हैं then all उन the सबका millions of पोषण cells होता which है। are there in the body, तो they उन get सबका nourished. पोषण कैसे होता So है, किस how they कैसे get होता nourished, है, by what process वो they get nourished, प्रकार से रस में बदल के सब how कोशिकाओं को it changes पचाता to है, rasa and इसके ऊपर तो nourishes all वास्तव में the हमारा कोई cells. नियंत्रण नहीं है। On this, हम सोचते actually, हैं we कि don't have any बाकी control. We can't जो even बायोलॉजी पढ़ते हैं understand that. उनको शायद Those उसका who इल्म have हो studied इस बारे में, biology, they लेकिन might be फिर भी having some knowledge about उसके ऊपर this, हमारा but नियंत्रण भी still, कुछ है नहीं। at least we do not have any control over that. हमारी सांस चलती है We breathe, तो उसके ऊपर भी हमारा कोई नियंत्रण but नहीं we है। do not have any control over वास्तव that. में अगर नियंत्रण होता तो हम शायद Actually, अपना if we जीवन would have नहीं had जीते control over जीते। that, then we would बच्चा not पैदा have been होता है even तो able to कैसे live as much as we live. When a आपको child याद is नहीं है born, क्या? तो बच्चा पैदा होता है, सांस when लेने a लगता child है is born, और he मृत्यु starts breathing, तक उसकी and सांस चलती है, उसका till हृदय death, चलता है, his breathing उसकी continues, पाचन heartbeat क्रिया continues, चलती है। digestion तो ये continues. हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण So these घटक are हैं कि very यदि सांस important की क्रिया elements को of our जारी हो life. जाए तो Without जीवन breathing, समाप्त हो if जाएगा। heartbeat हमारे stops, शरीर में then one खून will का die. संचालन होता है, If शरीर में there is खून blood नहीं चलता circulation है, in our body, तो ये without सब that we क्रियाएं cannot live. कैसे होती So हैं
All इसके these ऊपर activities, वस्तुतः how they नियंत्रण नहीं happen, है। actually we do not थोड़ा have बहुत any कोई control बोलता है over कि हम that. भोजन करना We have चाहते some हैं तो अपने control, हाथ से like भोजन we करते want हैं, to eat दाल दिया food, हम we सोना lift चाहते food, हैं we कुछ put in कर रहे हैं, mouth, तो हम we सोचते हैं walk. कि ये हम कर रहे हैं, We think लेकिन that we are वास्तुतः इनके doing ऊपर भी this, हमारा but पूरा नियंत्रण actually नहीं है। we do not have अगर complete हमारी control over प्राणवायु this also. If नष्ट our बेकार हो जाए pranavayu, तो हमारा हाथ the काम नहीं life करेगा। air, if it becomes जिन लोगों disturbed, को then पैरालिसिस we हो will not जाती be है able to lift our तो वो hand. अपने Those शरीर who के अंग have को कंट्रोल नहीं कर paralysis, सकते हैं, they उनका cannot नियंत्रण use नहीं their कर पाते। body properly. तो प्राणवायु से They होता lose क्या है कि control. So जैसे it अन्नमय works by शरीर शरीर में pranavayu, प्राणमय the शरीर life है, air. Like there is तो annamaya प्राणवायु से सब sharira, सब inside that there चीज़ें is pranamaya अपने sharir. शरीर की So by क्रियाएं pranavayu, जितनी भी the चीज़ें whole हैं, body functions, तो उसके ऊपर भी all the हमारा activities are कुछ done. नियंत्रण है नहीं। So we do not have तो any इसलिए control over यदृच्छा that. शब्द का प्रयोग किया है That कि is हे why the word यदृच्छा yadricha is used केवल here. उसी के लिए And नहीं here जिसको हम नहीं yadricha जानते is हैं, रोज not just for जानते हैं, that लेकिन we don't वास्तव में know कुछ or देख happen रहा है। suddenly, but तो एक actually whatever is योगी happening, व्यक्ति है, चाहे वो भक्त है या ज्ञान yogi, योगी है, whether he is a वो यही bhakta, karma सोचता है कि yogi or jnana ये सब yogi, प्रभु की he इच्छा से thinks हो रहा that है। this is all by अगर desire हम भी of कुछ कर्म Bhagavan. करते हैं और उसका फल If मिलता है तो we उसको भी also वो do some यदृच्छा ही karma and मानता है। get results, so he considers और that also as यदृच्छा लाभ yadricha only. संतुष्ट, यानी कि लाभ का मतलब होता है प्राप्त Here, करना, labha लाभ का means मतलब यहाँ पे attainment, to get ऐसा something. नहीं है कि It लाभ is मिलेगा not और just in the नहीं, sense of नहीं। profit. लाभ का मतलब है यहाँ Here, जो labha उसको means प्राप्त हो रहा है, whatever he gets, whatever he यहाँ achieves. प्राप्ति अर्थ में लाभ शब्द It है। is in the sense तो of वो जो getting. प्राप्त हो रहा है So, वो whatever he is getting, लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल is है, it प्रतिकूल है, जो भी है, beneficial or तो no, उस हर whatever एक it is. परिस्थिति में So, वो in संतुष्ट है। every situation, he remains satisfied. तो ये एक बहुत बड़ा गुण है So, this is a योगी का, great quality जो of a समचित yogi, जिसको बोला भगवान ने द्वितीय अध्याय में whom कि Bhagavan समचित said that योगी he is उच्चते, Samachitta. लाभालाभो, लाभ अलाभ, जय विजय, जय हानि, Profit, तो loss, इस समय victory, defeat. सुख दुख में जो So, in all these समशीतोष situations, स्थिति में रहता है in उसी को यहाँ happiness, संतुष्ट sorrow, बोला one गया। who remains तो maintains equanimity असंतोष of mind, हमारे who मन में remains रहता peaceful. है, So, we प्राकृतिक have क्यों असंतोष dissatisfaction रहता in है our mind. कि हमारे Why अंदर are we कामना रहती है, dissatisfied? Because we have और desires कामना and की पूर्ति नहीं होती है तो हम our असंतुष्ट रहते desires हैं। are not satisfied. Then और ज़्यादातर हमारा we असंतोष रहता है जब हम दूसरों को देखते हैं mostly we और remain हम अपनी तुलना dissatisfied when दूसरों के we साथ see करते others हैं। and we मैं भी compare इसी ourselves प्रकार with हूँ, मेरा भी others, इसी प्रकार that I also घर want to be होगा। like this, I should also have a. तो ये जब हम दूसरों से तुलना करते हैं So when we compare और ourselves जो with others उनको हम देखते हैं कि हमसे अच्छा है और मैं भी ऐसा बनना and चाहता हूँ, तो we उससे see हमारे that मन में एक प्रकार की the other असंतुष्टि person आती is है। better इससे than हम me, I want संतुष्ट to नहीं become रहते। like that, then we प्राकृतिक remain मनुष्य का जो मन dissatisfied with है our present वो situation. वर्तमान स्थिति में Mostly, संतुष्ट नहीं रहता है, human mind never हमेशा remains satisfied in the भविष्य present. की कुछ योजना Human बनाता है mind कि मैं इस always स्थिति में जाके plans संतुष्ट होऊंगा, about future, और अपने अंदर एक thinking that अभाव I की will become भावना satisfied in जन्माती the है कि future, मेरे अंदर इस चीज़ की and कमी always है, feels धन का some अभाव है, scarcity in his or her life, whether it संबंधों is का अभाव scarcity है, of wealth or संपत्ति का अभाव है, relationships or या post किसी क्रिया का position है, परिस्थिति का or है, some तो other कुछ ना कुछ situation, whatever. ये अभाव को खोजता रहता है। So और human वो being चीज़ always मिल भी keeps जाएगी तो फिर searching for वापस some किसी दूसरे अभाव को deficit ढूंढेगा। or scarcity. भाव से संतुष्ट नहीं Even होता, if some scarcity is भाव में इसकी fulfilled, बड़ी रुचि if रहती है, some desire is fulfilled, he want searches for तो more ये हमेशा scarcity. अभाव से आकर्षित So रहता है। always जो हमारे पास he है gets attracted उससे by संतुष्ट नहीं scarcity. रहता है, जो नहीं है He is not उस पर satisfied with ज़्यादा whatever ध्यान he हमारे has मन का at जाता present. है। Mind is more focused on what तो उसके कारण the फिर ये person doesn't have in life. मन में असंतोष पैदा होता है। So then the तो mind यदृच्छा becomes लाभ संतुष्ट का dissatisfied. मतलब है कि व्यक्ति जो है अपनी So here परिस्थिति what Bhagavan is परिस्थिति telling में is that such a संतुष्ट person, रहता है whatever situation is there in his or her life, और he remains दूसरों की satisfied with that, परिस्थिति का उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है, and it does not become क्योंकि उसके affected ऊपर by एक प्रकार others' की इम्यूनिटी है situations, उसके पास में। meaning जैसे he is immune इम्यूनिटी यानी कि रोग अवरोधक to क्षमता these हम ups and इम्यूनिटी downs. बोलते हैं कि हमारे ऊपर किसी So कीटाणु immunity का means the आक्रमण हो तो हमारा शरीर उससे the the प्रतिरोध करता self है, उससे defense लड़ता है system in the body. और हमको बीमार नहीं पड़ने देता। तो इसी प्रकार हमारी एक
क्षमता So it होती है protects कि us हम from दूसरों से diseases. प्रभावित ना हो। Similarly, we और also अगर have दूसरों this से प्रभावित capacity भी होना है तो इस प्रकार that we प्रभावित do हो कि not हम become आध्यात्मिक मार्ग में आगे affected by बढ़ें। others. And if at all we have to क्योंकि become भौतिक affected, मार्ग we में should आगे become बढ़ने से influenced in such a way that कुछ विशेष we लाभ होगा नहीं, come to the ईश्वर spiritual संतोष path नहीं or we प्राप्त progress होगा। on the spiritual path. तो इसलिए यहाँ पर Because कहा है कि becoming influenced in the material path is of no अयदृच्छा लाभ use, संतुष्ट है, नहीं तो will उसका simply मन be जो है वो dissatisfied. विचलित नहीं होता है इससे। So such a person, his mind is not और wavering, he is not bewildered. अगर कुछ प्राप्त करना चाहता है और वो प्राप्त And नहीं if he होता है wants तो to उसमें भी attain वो संतुष्ट something and रहता है, doesn't attain it, उसको भी अदृच्छा मानता है कि still ठीक he है, remains भगवान की इच्छा है, satisfied. He considers मैं it as कुछ प्राप्त yadricha, करना चाहता हूँ considers और it as उसमें the will of Bhagavan. मेरी प्राप्ति नहीं होती है He thinks that तो मैं if I सोचता हूँ want कि शायद something इसी में मेरा and I am पाप है, not getting it, then he thinks अगर that शायद प्राप्त हो जाती वो स्थिति होती। not कई बार getting ऐसा it होता भी is है in my favor only. It is good कि for किसी को me कहीं that I जाना am था, not getting what I want. उसको फ्लाइट पकड़नी थी लेकिन So like बीच में मिस हो some गया, person was फ्लाइट नहीं पकड़ सका वो, uh, तो उसको दुख he होता है had to कि travel काश by कहीं flight, मेरा ये but he नुकसान हो missed the जाता, कहीं flight, वहाँ मीटिंग ना हो and पाती। he was feeling sorry लेकिन बाद that में I पता missed the चलता है कि उस flight, फ्लाइट का जो and है he कुछ later came to know that दुर्घटना हो गई, the flight तो met उसको an बहुत अच्छा accident, हुआ, and then the बच गया person इससे। thought that it was good कई only, बार होता I है was ट्रेन saved. में, बस में, It happens ऐसी अनेक many times. कहानियाँ हमने पढ़ी हैं इस प्रकार की। तो जरूरी नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं कि अच्छा है वो अच्छा So it ही is हो, not हो necessary सकता है that उसका परिणाम what ठीक ना is निकले। तो happening to इसलिए us इस is प्रकार का जो necessarily व्यक्ति होता है कि bad अदृच्छा only. लाभ संतुष्ट है, वो इस प्रकार का व्यक्ति So such होता a है कि person जो who is satisfied, जैसी भी परिस्थिति होती है हानि की या लाभ की whatever या situation he has in his life, पराजय whether की, of victory तो or उसमें वो loss, victory or defeat, विषण नहीं profit or होता है, उसको loss, विषाद नहीं he होता है, doesn't उसको become निराश morose or नहीं होता है dejected. उससे। वो उसको सोचता है कि ठीक है, He चलो thinks that भगवान की इच्छा है। तो fine, अगर हम इस if प्रकार से अपने मन को this is बनाते हैं Bhagwan's will, Bhagwan's तो हमारा desire, मन एक so if शांति की we can अवस्था have में this रहता है। mental state, then अब we will इसमें remain प्रश्न होता है peaceful. कि ऐसा व्यक्ति Now the आगे question कुछ may भी be, तरक्की नहीं करेगा। then such a प्राय person, कभी he हम will देखते हैं कि जो not लोग बहुत progress in आगे बढ़े life, हैं because generally we किसी see प्रतिस्पर्धा that करके people आगे who बढ़ते हैं progress in कि life, कोई they समाज में progress चलना है by या इसको competition, करके that I दिखाना have है to move ahead कि of मैं भी कुछ others. हूँ। I have to show, तो इस prove to प्रकार others कोई that I आगे am प्रयास also नहीं करेगा। something. नहीं, So ऐसी then such a person, he कोई will not आवश्यकता progress. नहीं है। आप स्पर्धा अगर आपको So करनी है तो there आप is अपने no आप need से करिए for all this. If you want to compete, you compete कि with मैं ऐसा हूँ, yourself. और फिर आगे Why do you have to बहुत भी compete with आध्यात्मिक others? मार्ग में कीजिए, क्योंकि And that भौतिक too, मार्ग में you सफल should होने का compete तो with कोई रास्ता yourself ही in the नहीं मिलता। spiritual path. Competing मैं on the हमेशा material यही path कहूँ, is useless. जैसा अर्जुन ने कहा कि अगर Ultimately, मुझे you will become dejected स्वर्ग का only. राज्य भी मिल जाए तो भी मेरे मन को शांति नहीं Like होगी, Arjun said, that क्योंकि even मन if की I शांति achieve जो the है वो kingdom of भौतिक heaven, पदार्थों से नहीं I will मिलती। not be peaceful. ये Because अनुभव से material objects cannot pacify the मालूम mind. पड़ा। Arjun तो had told इसलिए this earlier. हमको तरक्की करनी So, है, हमको अपना if उद्देश्य we want to आध्यात्मिक progress, उद्देश्य बना के रखना है we should have our और spiritual उस goal पर हमको अग्रसर होना and है। we should progress और दूसरे अगर हमसे towards आगे हैं achieving तो the फिर goal. उससे हमको And प्रेरणा if लेनी है कि others इस are प्रकार ये moving आध्यात्मिक ahead मार्ग of में us, तरक्की करने के then we बाद इस should प्रकार take तरक्की करनी है। inspiration from उससे them, हमको ईर्ष्या that नहीं how होगी, they are progressing. Similarly, then नहीं we तो should हम also be inspired दूसरों को to भी दोष improve देने लगते हैं। ourselves. Otherwise, we जब start हमें blaming किसी others. कार्य में सफलता नहीं मिलती When है we do not achieve तो success फिर in some मन खिन्न activity, हो जाता है। then we become जब मन dejected. खिन्न होता है And when we तो are हम dejected, खिन्नता दूसरों पर then दिखाते हैं, we express our दूसरों में frustration गलती over ढूंढते, others. We यहाँ find तक कि faults in भगवान को others भी हम to the extent that we आक्षेपित करते हैं, भगवान even में दोष make देने लगते हैं। allegations on Bhagavan. We अनेक लोग find ऐसे faults जो in भगवान के Bhagavan हवाले also. रहने लगते There हैं are जब many people मन की who इच्छा even पूरी ना हो, criticize Bhagavan when हमारी their जो desires are सोचते हैं not सब ऐसे fulfilled, ही है, that there is no तो Bhagavan and उनकी all. श्रद्धा खत्म हो It जाती is है। just some तो stories. ऐसा नहीं होना So चाहिए, they lose their faith. क्योंकि So this should इससे not यही happen, सिद्ध होता है कि हम अपने because को so बहुत this बुद्धिमान proves मानते हैं that we और think जो that we are परिस्थितियाँ very मिलती भी है intelligent, चाहे वो and असफलतापूर्ण whatever हो तो ये situation we बताते हैं कि have इसमें भी got हमारा in लाभ life, ही हो सकता है। whether it is our, even if it is of our failure, we इसलिए do not realize संतुष्ट that it may कब be also होगा, good for us. तो So we should ये remain ज्ञान जब satisfied. हमको होगा, जब हम इस प्रकार को समझेंगे, जब हम इसको So when we have this type of हमारी दृष्टि जो है knowledge, when we have this थोड़ी type of शार्प दृष्टि understanding, होगी, हम
when we have this broad vision, not free from narrow mindedness, then there will be satisfaction in the mind. That is why Bhagavan is telling here yadricha labha santushta. And then he also says vimatsara. So matsara is a very big problem in our society. Matsara means envy, jealousy. Jealousy is of many types. One is at the gross level. By seeing others, we become jealous. It means that we are unable to tolerate others' progress. Somebody is moving ahead of us. तो उससे एक मात्सर्य का भाव, ईर्ष्या का भाव मन So में आता somebody है, is moving ahead of me, then I become jealous. तो उसका पहला नुकसान तो हमको स्वयं ही होता So है, क्योंकि the हमारे हृदय first में जलन होती है, disadvantage is that we ourselves प्रसन्नता suffer. नष्ट होती है। Our heart जिससे starts ईर्ष्या करते हैं burning. उसको शायद पता भी ना हो We कि आप lose ईर्ष्या कर रहे our हैं। happiness. The तो person पहले बात against तो whom we are यही jealous, नुकसान होता that person may not even know that we are है। jealous और of him or her. दूसरा ये So है it is कि our उसमें loss आपकी only. बहुत And the शक्तियाँ other खत्म point होती is जाती that हैं, a lot of उसमें our आप energy चिंतन gets करते रहते हैं। wasted. उसमें एक भाव आता है कि इस व्यक्ति का किस प्रकार से मैं अहित करूं, Then we और start जिस always व्यक्ति से thinking, ईर्ष्या है, अगर उसका how कुछ should I cause harm to the other उससे कुछ person? हानि And होती if है, the other बीमार हो person जाता है, falls sick दुर्घटना or हो जाती है, चोट लग जाती है, meets an तो accident, अंदर अंदर मन में एक प्रफुल्लता आती then है। we ये feel जो happy. आसुरिक भाव है, So this is the demoniac दूसरों mentality. की हानि देखकर, दूसरों का दुख देखकर अगर हम प्रसन्न होते हैं, तो ये एक सज्जन व्यक्ति का गुण नहीं है। So if we feel happy by ये seeing ईर्ष्या others' की भावना distress, so this is not a बहुत सूक्ष्म symptom तरीके से भी रहती है, और of a जिनसे good आप प्रेम person. करते हैं उनके प्रति भी So आपको this ईर्ष्या jealousy होती is है। very subtle, and the one ऐसा with नहीं है whom we love, कि ईर्ष्या जो है we may even be केवल jealous of शत्रुओं से that ही होती person. है। अनेक बार Jealousy is not मित्र भी just एक with दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, enemies. लेकिन वो बहुत There क्षुद्र may be होती है, jealousy even among और friends, शायद but that वो jealousy जानते भी may ना be हो उस very बात को। subtle, and they ये may तब not पता even चलता know है जब that they are व्यक्ति jealous. की कुछ स्थिति अच्छी हो जाती है, तो अंदर से अगर वो We realize this jealousy only when one अंदर का friend कुछ विश्लेषण करता है तो उसको progresses a लगता lot है कि in हाँ, life. मेरे अंदर कुछ पीड़ा So होती when है। the other one तो इस तरह की analyzes हमें his heart, प्रसन्नता होनी he चाहिए। may find that yeah, जैसा there is some pain in my heart गोपाल seeing चंपू के the पाठ seeing में my हमने friend's पढ़ा progress. कि पर्जन्य बाबा के Actually, we 5 should be पुत्र थे, happy, जिनमें like नंद we बाबा read जो थे yesterday in वो Gopal प्रिय थे, Champu. So और Parjanya वो Baba सबसे had प्रिय five थे। friends. Nand तो Maharaj वहाँ was the बताया गया third, कि and नंद बाबा को सब he प्रेम was करते थे, और इसको देखकर loved by शायद उनको everyone. बहुत प्रसन्नता And होती थी। seeing that other brothers were very प्राय happy, करके यही होता है कि भाइयों भाइयों but में बहुत generally what दुश्मनी होती happens है। is that अगर there is एक lot भाई of आगे jealousy निकल जाए between तो brothers. If दूसरे one भाइयों को brother बहुत progresses, प्रसन्नता होती है, then उससे the ईर्ष्या other होती है, अंदर brother, से एक जलन रहती है, और he बहुत feels झगड़े परिवार jealous. में इसी के कारण होते हैं। भाई भाई के, भाई बहन And there are बहन so भाई के many आपस में, fights and clashes in माता पिता the की भी, family. माँ बाप की Even भी लड़के से ईर्ष्या हो सकती है। even अगर parents may become लड़का जो है jealous of the बहुत son आगे तरक्की करता है, if the सब son उसके गुण गाते हैं, progresses a lot, तो because उनको ऐसा then लगता है कि हम everyone कुछ भी glorifies the नहीं son हैं, only. और So उनका then they ये think कहा that we जाता are है कि देखो nothing, ये उनके पिता हैं। कोई प्रसिद्ध हो जाए तो or फिर उसके they may be दशक लगते हैं, recognized as उनका परिचय the फिर उस father or mother संस्कृति के of that अनुसार ही son. दिया जाता है कि ये उनका भाई है, ये उनका मामा If है। somebody becomes famous in the family, then others are तो designated इससे as being related to the famous person हमको only. ऐसा लगता है कि ये बड़ी बात है कि इतने बड़े आदमी So के we भाई may हैं, think that लेकिन उनके it अंदर में is so कुछ great that this जलन भी person is होती the है father or mother कि of such a great मैं, इसका person. मतलब मेरा But अपना कोई actually, the parents have मेरा some अस्तित्व jealousy in इसके that, कारण है। thinking that we do not have अक्सर our देखा own जाता है कि जहाँ बहुत identity. घनिष्ठ Our संबंध होते identity हैं is परिवार connected के, with this son who is so भाई famous. भाई के, So it is आपस में often भाइयों में seen कितना प्रेम that होता है, between विशेष close तौर से बचपन relations में, like brothers, लेकिन भाई etc., जब थोड़े बड़े हो जाते हैं when तो they वो are अच्छे कर्म करता young, है, they have so much love among each other. But when they अपने grow यहाँ up, अच्छा हो या उसको one अच्छी starts नौकरी मिल जाए, तो progressing, दूसरों के मन one में studied जलन a रहती है, lot, he उसको दिखाते progressed. नहीं है, They don't show the other, ईर्ष्या से the प्रकट नहीं होती jealousy. है, It is not प्रकट किसी expressed विशेष grossly. परिस्थिति में होती है। It gets expressed only in some लेकिन special अंदर बहुत बसती है circumstance. ईर्ष्या। But तो यहाँ पर internally, that ये envy is बताया there. गया है कि
विमत्सर है, उसके अंदर में इस प्रकार की ईर्ष्या का भाव नहीं है। क्योंकि ईर्ष्या का भाव क्यों So होता है? here it is said वो तभी that होता such है a जब किसी person उचित who is दृष्टि में, yogi, he is जैसा हमने vimatsara, he कहा कि doesn't अगर have कोई ज्ञान है jealousy. And why और will there ईर्ष्या be से होता jealousy? है, Jealousy happens when तो you are जो narrow ज्ञान नहीं in है, very उसका narrow कुछ ऐसा vision, कर्म है, पूर्व जन्म में उसने कुछ limited कर्म किया vision. होगा जिसके But this फल के person, he अनुरूप ये understands स्थिति में अब है, that चाहे the वो other हमारी person, कृपा he की might वजह have से done हो। some lot of ऐसा ही pious व्यक्ति है जो karma in the जिसके previous परिवार life. में So now कोई he is in a very ऐसा good आपका कोई situation. लेना देना नहीं है, तो उसके प्रति आपकी ईर्ष्या नहीं होगी। If such a person is in हमारी some other ईर्ष्या जो है वो family अपने with whom आसपास के जो with हमारे you have nothing to संबंधियों do, से, then you will not feel jealous. जो बहुत You दूर feel तक होती jealous है उससे only नहीं with होगी, people who are related या to you. या एक Those who have no सहयोगी है relation जो with you, you don't आपके feel jealous. समकक्ष का हो। And also पार्षद you यदि feel बहुत ऊंचे jealous पद पर है with तो उससे भी people who ईर्ष्या are नहीं होती। at equal level to एक you. गरीब If आदमी जो है somebody is किसी in a much अमीर higher व्यक्ति से position ईर्ष्या than नहीं you होगी, don't feel वो अगर कहेगा jealous कि of दूसरे him. गरीब व्यक्ति जो A उसके poor पास person थोड़ा will ज्यादा feel है jealous of उससे another पैसा poor ज्यादा person है only तो who is ईर्ष्या little होगी। bit wealthier, तो but इसी he will not प्रकार feel हमारी jealous of ईर्ष्या some जो है वो millionaire. आपस के संबंधों में ही बनी Similarly, रहती है। our jealousy is तो इसके प्रति limited हमें to जागरूक our रहना चाहिए। people who are related जब to हम us. ये So we should समझेंगे remain aware सबका अपना about कर्म है, that. सबका अपना If पुरुषार्थ we है and when we if we और understand सबके ऊपर that भगवान है, everyone has his और own सब जो कुछ karma, हो his रहा own है ये purusharth, मैं and केवल everything is ईश्वर की happening by शक्ति the will of से Bhagavan, प्राप्त कर रहा हूँ, I am तो whatever I am ईर्ष्या getting खत्म is हो also जाती है। by the will of Bhagavan. और ईर्ष्या करने से कोई लाभ Then मिलता jealousy भी will नहीं go है। away. And there ईर्ष्या is आदमी jealousy, से there is no क्रोध करने benefit और by being अंदर jealous. जो है एक नकारात्मक भाव पैदा होता है It creates और a दूसरों very के अहित की negative कामना रहती attitude है, and और उसके ऊपर the से जब feeling आपको थोड़ा of मिथ्याचार करना causing पड़ता है, distress or bringing बाहर harm से to आप others. दिखाएंगे कि आप And अच्छे then हैं, you also become a लेकिन hypocrite. अंदर से वो जलन बनी Externally, रहती you है। show you are a friend, तो but इस तरह से internally, नहीं you होना feel चाहिए। jealous. So, और this should ये not happen. रहती है, ये बहुत And it सूक्ष्म is there, तरीके it से रहती happens, है। it remains यहाँ तक hidden कि in गुरु the शिष्य chitta in a के very बीच में subtle भी way. देखा गया है It कि happens कभी even between guru शिष्यों के and प्रति भी disciple. शिष्यों की भी गुरु के प्रति ईर्ष्या हो सकती है। It is often seen ऐसी that कहानियां हैं कि disciples may become गुरु को jealous जहर of देकर के guru. मार देते हैं। There are stories where देश some में तो आपने बड़े disciples बड़े गुरुओं killed के the साथ भी guru ऐसा होता by है, giving बहुत महान poison. गुरु It has जिनके happened with many great हजारों लाखों famous शिष्य हैं, gurus उनकी ऐसी who स्थिति had होती है thousands क्योंकि or उनका lakhs वो of कष्ट जो है disciples. वो सहन नहीं होता है। वास्तव में जो So सही मायने में शिष्य है the उसको तो प्रसन्नता ही होगी the real disciples should कि इस actually प्रकार feel का happy कोई that गुरु our अच्छा मिला है। Guruji is so great, एक हृदय का भाव रहता है, because there परंतु should ऐसा be नहीं one होता है जब heartedness अपना with the Guru. अहंकार But सामने when it आता है, doesn't happen and the अहंकार में ahankar इतनी comes ईर्ष्या out, होती है, then due to ahankara there is इस प्रकार की jealousy. दुर्भावना मन में पैदा हो जाती है। So then this kind of और ये जो negative दूसरा जो attitude शब्द यहाँ develops. भगवान ने प्रयोग किया है वो है The other word that द्वंद्वातीत। Bhagavan is using here is द्वंद्व से अतीत होता है। Dvandva Atita. तो द्वंद्व का मतलब होता है यही लाभ हानि, Dvandva means मान duality, अपमान, profit, loss, स्तुति निंदा, victory, defeat, अनुकूलता प्रतिकूलता, honor, dishonor, favorable, जय unfavorable. पराजय। तो इस प्रकार के द्वंद्वों से वो अतीत रहता है। अतीत रहने का मतलब है This कि इन person is द्वंद्वों beyond का these उसके ऊपर dualities. प्रभाव नहीं Being होता। beyond means that these ऐसा नहीं dualities है do कि not उसकी affect him. It is जय not that पराजय नहीं होती, he doesn't face ऐसा नहीं victory है or कि उसके defeat. पास It is अनुकूल या not that he प्रतिकूल doesn't स्थिति नहीं face आती है, favorable or ऐसा unfavorable नहीं है कि situations उसकी in life. स्तुति या निंदा It नहीं is होती, not उसकी that भी he निंदा होती doesn't है। get ऐसा नहीं है honored or कि does यही not get संसार में dishonored. उसके लोग निंदा There is करते no हैं। person in this world who has never अगर been उसके criticized. प्रशंसक हैं तो निंदक भी होंगे, If वैसे you ही have, though, if people praise you, there are इसलिए also people who इस criticize स्थिति से you. वो विचलित नहीं होता, So, such a person, he does not become वो जो है affected by this situation. प्रसन्न His रहता है। mind और जो always जिसके साथ remains संतुष्ट हो, happy. जो कहा गया है, वो ऐसी स्थिति उसमें रहती है। तो हमारा मन जो प्राय करके द्वंद्वों में So, ही this is जीता the है। situation. Our mind generally lives मन का in एक दूसरा गुण dualities है, only. जैसा मैंने पहले कहा कि मन का एक गुण है As कि I वह said, भाव की one ओर quality of the mind बहुत आकर्षित होता है। is gets ऐसे ही हमारा very मन much जो है हमेशा attracted to द्वंद्व में चलता है scarcity. Similarly, our कि mind अगर always moves in duality. जिससे आपकी मित्रता है So if you have तो friendship उसके साथ में with कुछ someone, शत्रुता भी जुड़ी then रहती है। you will also have some enmity जैसा मैंने with कहा that. कि मित्रों में भी ईर्ष्या रहती है, तो द्वंद्व हमेशा चलते हैं। As I said, that there is jealousy among जिससे friends, आप प्रेम so करते this हैं duality always वही continues. उसके साथ में The one whom you फिर love, घृणा भी रहती है, you also have hatred लेकिन towards that person.
but it doesn't appear all the time. And other point is its degree is different. If so you love someone, love is more, hatred is less, so hatred remains suppressed. But in some specific situation, that hatred comes out. So you must have seen that those people with whom you have lot of love, when they become angry, then their language is totally different, and they use such bad words, abusive words, which pierce your heart. So this language has not come up suddenly. It means that such samskaras were already there within, and in this situation, those samskaras got triggered. The situation brings the samskara up, because the whole game is of samskaras only. But we think that he became angry due to some reason. Out of anger, he spoke like this. So if he is speaking like this out of anger, that means it is there inside. It is coming from there only. Nothing is coming from outside. It is coming from inside only. So this bija remains inside. In Yoga Sutra, you find wonderful analysis of this whole mechanism. In Yoga Sutra, it is explained. In Sankhya also, it is explained that one woman gives happiness to somebody, gives distress to somebody, and remains neutral towards somebody. She gives pleasure to husband, she gives distress to the other person, and somebody is neutral. But the one to whom she gives pleasure, she also gives displeasure to that person, distress, and also neutrality. So knowledge comes from sattva, and in the situation when the mind is in rajogun, then there is distress. और जब तमस की स्थिति हो जाती है तो उससे अज्ञानता की उदासीनता की स्थिति आती है. तो ये गुण जो है ये आपस में tamas there is ignorance, so these gunas keep changing. तो ये अलग बात है कि जिसके साथ में आपका अच्छा संबंध है उसके साथ में प्राय करके आपका मन जो है वो सात्विक स्थिति में रहता है. So when you have good relations with those persons, you have sattvic state of mind. But with the same person, when your mind gets into rajasic state, then you will start using abusive words, and then you will not have any control over that. That time, whatever you will listen from that person, if you see that person also, you will feel that person has changed, because it is said that a face is the index of the mind. So that person appears also differently. It is not that his words are different, but his facial expression is also different. So you feel that how can this person stare at me? The one who was always so light-hearted, jovial, why is he staring like this at me? So this happens because it is there within. For this only the word duality is used, because our mind works in duality. Such a person that Bhagavan is telling in this verse, he rises above this duality. So what is told in this verse here, actually those things are told which were told in the earlier verse. वो यही चीजें उन दो श्लोकों में आई थी, लेकिन अंतर क्या है? In those two verses also this was said, but what is the difference? ऐसा अपना प्रयत्न करता है. The difference is that earlier it was said such a person he strives, he strives to give up. यत माने नियंत्रण में रखता है,
he keeps the प्रत्यक्ष chitta सब in परिग्रह control, सब परिग्रह को छोड़ देता है, तो and वहाँ he gives up प्रयत्न all the से करता parigraha. है। So अब there it यहाँ was पर जो mentioned कहता है, he यहाँ पर जो strives. And बंधन here है what कि उसको Bhagavan ऐसे is प्रयत्न telling करने से, ऐसे is that साधना करने से उसकी जो स्थिति आती है वो here स्वाभाविक होती Bhagavan है। is telling that यहाँ by जो वर्णन किया striving, जा the रहा है state that he is वो having, it व्यक्ति is की स्वाभाविक normal. स्थिति का वर्णन है Here कि Bhagavan is वास्तव में talking ऐसी about स्थिति the के लिए उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता। mental state of the person. इसलिए For यदृच्छावान this he doesn't have to strive. भोगातीतो This विमत्सरो is the ideal state समसिद्धाव of mind. सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। सो समसिद्धाव सिद्धौ च, कार्य की सफलता को सिद्धि बोलते हैं और असफलता So को असिद्धि बोलते हैं। success is called तो siddhi ये and failure उसको is प्राप्त होती asiddhi. है, So he also gets this, उसमें उसका हर्ष और but शोक नहीं होता है। सफल हो he गया does not feel happy or हर्षित हो जाना distressed और in this. असफल हो गया तो शोक मग्न हो जाना, ऐसा उसका नहीं होता है। वो अपनी समता की स्थिति में रहता He है। remains equipoised. और उसका कारण क्या है कि वास्तव में हमारा जो अपना स्वरूप है And what is the वो तो reason? समता The की reason is स्थिति में that ही है। our आत्मा Swarupa, को इन सब का कोई फर्क नहीं that पड़ता है। is और in the क्योंकि state of आत्मा Samata only, समस्थिति में because रहती Atma है doesn't इसलिए get क्षमता affected की by बड़ी all शक्ति this. है। And because लेकिन Atma इसलिए remains क्षमता को in the प्राप्त state करने of के लिए Samata, आत्मा को समता equilibrium, रहना पड़ेगा ना। it can see the तो imbalance हम outside. वास्तव में अपने स्वरूप में समस्थित रहते हैं, So in our लेकिन Swarupa, we remain in the state of क्योंकि Sama, हम स्वरूप से equilibrium, but अलग हैं, because we अपने स्वरूप में स्थित नहीं हैं, are now not अज्ञान situated के in our कारण Swarup due to हम लोग ignorance, विषमता का अनुभव करते हैं। then we वास्तव में experience विषमता the हमसे state of बाहर है। Vishamata, तो ऐसा व्यक्ति lack of जब मन equilibrium. की We are ऐसी स्थिति हो disturbed. जाती है तो So वो when a person कुछ is in कार्य such a करता state है of mind, तो then if he does something, उससे वो बंधन में नहीं पड़ता है। कृत्वापि न he निबध्यते। doesn't fall in the state of और फिर bondage. इसी को आगे श्लोक में फिर और बढ़ाते हैं कि वो किस प्रकार से And then मुक्त in the रहता है। next verse, he उसकी वही speaks about स्वाभाविक this स्थिति का further, वर्णन फिर how he आगे remains अगले श्लोक में दिया है liberated. भगवान ने। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय चरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो आसक्ति एवं Translation: देहात्म भाव all से action मुक्त is है, dissolved of जिसका one मन who is devoid of आत्मज्ञानावस्थित है, attachment, who और वो is केवल liberated केवल from bodily आत्मपर्यंत identification, परमेश्वर की whose उपासना के mind लिए is प्रयोग established in करता है। knowledge of the self, and who acts exclusively for the sake of yajna, उसके सारे कर्म विलीन हो जाते हैं। for the worship of the supreme immanent self, Parameshwar. तो ये जो संघ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, So गत here संगस्य, Bhagavan is talking about Sangha, ये Gata बहुत बार आ Sangasya. चुकी है This word has कि किस appeared प्रकार many से times, आसक्ति ही मूल that कारण है। how वो asakti आसक्ति is the main किसी वस्तु reason. विशेष में, किसी व्यक्ति में, किसी परिस्थिति में, किसी क्रिया में, So जो भी the हमारी asakti आसक्ति attachment रहती may be है in some object, in some तो इनसे situation, वो in some मुक्त हो जाता है। activity. So we remain attached to all this. So, but this person, इसके he लिए remains मुक्त free होने के from लिए all उसको these प्रयास नहीं करना attachments. पड़ता है। He doesn't प्रयास की now have बात to है पहले strive 20 और for 21 this. श्लोक में आई थी, लेकिन यहाँ The prayas, आगे the पिछले striving, श्लोक that में was देखिए वो explained in स्थिति 20 है and जो उसके 21 लिए earlier. ऐसा But as I उसका said, this स्वाभाविक is है। the situation where उसके this लिए becomes his उसको समता की swabhava, स्थिति में होने के लिए कुछ अभ्यास नहीं करना and he पड़ता। doesn't have to do any इनके practice, abhyas, अब to be in this state. उसने एक प्रकार की Meaning, इम्यूनिटी प्राप्त कर ली है he has इन achieved सब द्वंद्वों state से of लड़ने के immunity लिए, from द्वंद्वों all से these मुक्त है। dualities. और क्योंकि वो आसक्ति से मुक्त है And because he तो is free इसलिए from उसको कहते हैं attachment, परामुक्त से, that's why he is कि उस called पर as उनका कोई Mukta, प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि that he वो is not अपने स्वरूप affected में by स्थित this. हो गया। Meaning, he is इसलिए कहा situated in his ज्ञानावस्थित Swarupa. चेतस, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है Because our Swarupa, वास्तव में actually, अज्ञान के कारण हम उसका हमको due अभी to ज्ञान नहीं Ajnana, है। अज्ञान के we do not know अज्ञान about भाव that now. अज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान के कारण हमारा अपना जो स्वरूप Due था to Ajnana or वो ignorance, अभी ढक गया है। मुझे the बड़ी आश्चर्य knowledge होती of है कि हम Swarupa अपने is स्वरूप covered. को ही कैसे भूल सकते हैं।
And it is a great surprise, wonder that how we can forget our own Swarupa. We may forget everything, but how can I forget our own Swarupa? So this is the power of Maya. कि भगवान की माया का इतना प्रबल प्रभाव है कि जो असंभव चीज है उसको भी संभव बना देती है। Bhagwan's Maya is so powerful that it can make the impossible also possible. Otherwise, how can we forget our Swarupa? जैसे कोई But लोग it happens. बहुत ज्यादा शराब Like पी लें या नशा कर लें some person, तो उनको यही पता he नहीं रहता फिर कि वो कौन consumes है lot of wine, और कहाँ पर है। liquor. So that तो person will forget himself, इस प्रकार where से he is, जाता who है। he is. तो कैसे होता है वो वास्तव में शराब तो बाहर से ही आई है, उसकी So how शराब does तो it बनाई गई happen? है, The wine has come लेकिन from भी outside only. It is वो not in the Swarupa. एक प्रकार की ऐसी But स्थिति में still, पहुंच जाते हैं कि वो ये भी he achieves नहीं a पता कि state वो कौन है। where he even forgets that who he or तो she ऐसी is. स्थिति जीव की अभी भी है माया के So कारण। currently the Jiva is in this situation due to Maya. और जब उस माया का प्रभाव And when समाप्त हो जाता है the तो उस समय influence जो of है that वो Maya is gone, ज्ञानावस्थित चेतस में then this person, वो ज्ञान की अवस्था में उसका चित्त जो है वो स्थित होता है, यानी कि उसको फिर ये he भान becomes रहता है कि situated in मैं the state शरीर of नहीं हूँ Jnana. Then he और knows that I am not मैं this body, आत्मा हूँ, I am भगवान Atma, का अंश हूँ और the वो शरीर Angsha हूँ। of Bhagavan, तो इसको and I ज्ञान am अवस्थित his चेत से बोलते हैं। Dasa. तो यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस प्रकार का ज्ञान नहीं है जैसे हम So this is मनुष्य not का ज्ञान that type of प्राप्त करते Gyan, हैं like we get इंद्रियों से, knowledge, किसी Gyan इंद्रिय of से। the material objects by तो contact of ये स्व senses. को ही स्व का ज्ञान है, इसके Here, बारे में the बहुत Swa has विचार the है कि Gyan of Swa. So there is इसके lot of द्वारा deliberation on this in Shastra, तकनीकी व्याकरण की because दृष्टि से एक दोष माना गया है कर्म करने from में। the Vyakaran point of view, तो this is considered जो a करता है defect, वो स्वयं कर्म नहीं that होता है। आप Karta किसी चीज cannot be को देखते Karma. हैं तो आप वही If की you वही see स्वयं something, होते हैं। then you are not आप that स्वयं को what you are जानते हैं तो seeing. स्वयं ही So जानने if वाले you और are स्वयं knowing ही जानने yourself, का विषय। तो then ये you are कर्म the कर्तृ knower विरोध and you are the सिद्ध होता है। known. So this is तो ये karma बाकी सब kartri जगह virodha. है, लेकिन So it अपने is स्वरूप का ज्ञान applicable in नहीं all हो other पाता है क्योंकि things, स्वरूप का but when ज्ञान it comes to knowledge यदि of आपने स्वरूप Swarupa, को then it is सीखा not applicable, because to know the Swarupa, you have to be situated in the तदा दृष्टि Swarupa. स्वरूप अवस्थानम योग सूत्र में कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में जब हो जाता है तो फिर उसकी वास्तव में किसी चीज में आसक्ति So होती in नहीं this, है। when the person is in क्योंकि such a situation, he is not पुरुष attached तो to anything, उपनिषद में बृहदारण्यक because उपनिषद में कहा in गया the है कि असंग Brihadaranyaka नहीं होता Upanishad है it is पुरुष भी, said कि पुरुष तो that असंग ही है। Purush is Asanga. इसका शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इनके The साथ Atma has कोई संयोग संबंध नहीं है, no समवाय Sanyoga संबंध नहीं है। Sambandha with the संयोग Sharir, संबंध का तो no प्रश्न Samvay ही नहीं है। Sambandha, इसके साथ and तो there is कोई no question तादात्म्य of having संबंध any नहीं है, relation इनमें with से the कोई भी Swarupa. There is संबंध no नहीं है। Tadatmya Sambandha. There is केवल no relation अज्ञान of के any कारण type है, अज्ञान with the का ही body. सब खेल है। It is just due to और ignorance. ये केवल एक मन की स्थिति है, This is just ये a आसक्ति जिसको state कहते of mind, हैं, ये disattachment. आसक्ति मन में है, मानी This हुई है, attachment is in the वास्तविक mind. नहीं है। क्योंकि अगर ये We have वास्तविक just होती assumed it. It is not तो real. If it would इसका have been आविर्भाव real, संभव ही नहीं। then it would not have been यदि हमारी possible to get समझ में rid नहीं of है it. तो हम इसका कैसे If अनुभव this कर पाएंगे, attachment would वास्तविक have been नहीं in है। our Swarupa, तो then how could we get मनुष्य rid of it? इसीलिए बोलते हैं कि मनुष्य So सीव्यते। human being is called Manushya सीना बोलते हैं ना, because जैसे दो चीजों को आपस में सी देते हैं, कपड़े के दो टुकड़े हों उनको आपस में Sina सीते हैं, means in Hindi, हम Sina देखते means हैं। to tie तो मनुष्य two क्या pieces करता है, of अपने cloth मुख से together. So what does संबंधों Manushya को do? सीता है। He ties relations तो ये सब with his संबंध जितने भी mind. बनाए जाते हैं So मन all से ही these बनाए जाते हैं। relations that are made, they are माँ बाप made से बच्चा in the पैदा mind होता है, only. उसका भी उनसे संबंध है, लेकिन वो भी उसको बताया जाता है कि तेरी माँ है, तेरा पिता है, कहीं So बाहर you have मुफ्त में तो नहीं आता है so parents consider relation with the कि यहाँ child. कौन मेरे So पिता हैं, यहाँ कौन this मेरे all माता है। relationship is in the mind only. तो ये सब You मानसिक don't है। see that externally. This is all mental. जितनी भी हमारी आसक्तियां हैं All the वो attachments that we have, मन के स्तर पर ही हैं, they are all in the at the state of वास्तविक नहीं mind है, only. They are not मानी real. हुई है। They are just तो assumed. उसको अगर हमको हटाना है तो ज्ञान से So ही if we हटेगा। have to get rid of that, it is अगर only हम इसको possible ठीक by प्रकार से अनुभव कर knowledge. लें कि वास्तव में इन If चीज़ों से we मेरा कोई get the संबंध proper है नहीं, experience that actually we are not तो related to all this. फिर आप
then द्वंद्वातीत होके, you निर्मत्सर will होके you will go beyond the dualities. व्यवहार उनसे कर सकते हैं। तो आसक्ति मन में कैसे है इसको समझने के लिए एक उदाहरण मैं देता हूँ कि एक व्यक्ति So how the attachment is there in the mind, I'll give an उसने example. बहुत मेहनत की, पैसा So there कमाया, was a poor बढ़िया man. मकान He worked बनाया, very hard, earned money, उसके 2 built a बच्चे थे, house, बड़े हो गए, had children. उसने They और also पैसा grew up. कमाया, Then तो he earned more wealth. वो सोच रहा था कि एक और मकान खरीदेगा बड़ा वाला Now he उसके was ऊपर, thinking that he will लेकिन मन में purchase एक a bigger house लालसा हो and जाती है sell the और जिसका smaller और one, कोई अंत नहीं है। because mind has this desire. किसी के पास में साइकिल The नहीं है तो desires अच्छा have no साइकिल end. मिल जाए बच्चे को If तो when you खुशी don't उसको have कुछ और हो cycle, जाती है। when a child doesn't have cycle उसके and बाद gets a cycle, he feels so साइकिल की कोई happy. कीमत नहीं रह After गई, some time, that स्कूटी cycle चाहिए, has no value. Now he wants a स्कूटी bike. मिल जाए उसके बाद में मोटरसाइकिल, Now he फिर wants a छोटी से बड़ी कार। तो motorcycle, इस तरह से car, जो है then वो bigger car. In बदलते this रहते way, हैं, बढ़ते रहते हैं। desires keep changing and they keep increasing. तो लेकिन हुआ क्या कि एक Now, दिन उसके what मकान में happened? आग लग गई, This once बहुत भयंकर आग लग there गई, was सारा मकान जल fire गया। in the house and the तो entire house वो was आया, देखा burning. मकान में आग लगी हुई है, When he came, he तो saw रो रहा the था house was on कि मेरे fire मैं तो and he बर्बाद हो was गया, मेरी crying सारी that जीवन की I कमाई am गई एक finished. मकान में रख My दिया। whole life savings are तो lost. पुराने ज़माने की बात है जब उस समय इंश्योरेंस वगैरह And होते this थे, is about olden days when there was no आज तो insurance or इंश्योरेंस anything. वगैरह Nowadays, people विदेश get में their तो home also insured. आवश्यक है कराना, In भारत foreign में तो countries, it is ज़बरदस्ती करानी compulsory. पड़ती है। In India, I don't know it is whether it is compulsory or no. तो वो रोने लगा, रोने चिल्लाने लगा, So he was दूसरे crying, he लोग was उसको shouting, बता रहे थे कि wailing, रो मत, and क्या the है, others were telling him that क्या कर don't सकते cry. हैं इसमें। Now, वो what can गया we फायर do? ब्रिगेड को, लेकिन भारत He में called फायर up the ब्रिगेड fire तो जल्दी brigade, जल्दी आने वाली है, but in India, they cannot come so quickly. पहले तो कोई फ़ोन उठा ले। If तो आप somebody भाग्यवान receives हैं। the phone, that itself is a great तो fortune. लेकिन इसी बीच में एक पड़ोसी का लड़का आया, उसने कहा कि अरे रो क्यों रहे हो, कल So ही amidst आपने all किसी this, से the बात की थी, neighbor's उसने कहा कि आपका मकान तो son जल गया है। came and he was telling, "Arey, why are you crying? Yesterday तो only आदमी we talked to your उसने रोना son बंद कर and he दिया, said that your house बोला was ठीक है already चलो sold." ठीक है, जल गया तो जल गया, अब क्या So then he करें। stopped crying and he said that, okay, fine, it तो is उसकी burnt, मानसिक burnt. स्थिति तुरंत Why do बदल I गई, care? So उसको तुरंत immediately फीलिंग his होने mental लगा state changed. कि Now he अरे was आग not बाहर ही नहीं लगी है, suffering. इसके अंदर भी लगी हुई है, Earlier, the जलेगी। fire was not just outside, it was लेकिन within जब him समझा कि also. नहीं ये तो तुम्हारा But when दोस्त है, he तुमको came to शायद know पता है that नहीं तुमको, your इसकी तो son, डील maybe हो he गई है, forgot वो to tell ये you है, तो that मकान he तुम्हारा है, already sold इसका this जिसका house. है उसका जल रहा है, तुम्हारा जल Whoever रहा है। purchased it, it is his loss, not तो yours. रोना उसने बंद कर दिया। So then he stopped crying. थोड़ी देर बाद में उसका लड़का भी आ गया, After some time, और his लड़के ने son देखा came अरे क्या there मकान लड़ रहे हैं और तुम चुपचाप खड़े देख रहे हो, इसको कुछ कर क्यों and नहीं रहे। he तो said बाप ने that, कहा तो "Arey, ये तो you तुम्हारा are ही why are है, you not doing तो anything? उसने You डील told कैंसिल कर दी। that it was sold." So then the son अब वो said फिर that, "No, रोने no, लगा, it was not sold. The deal was cancelled." So now the father again started crying कि मैं तो मर गया, मैं लुट गया, मेरा that सब I कुछ am बर्बाद हो finished. गया, मकान जल गया। I lost everything. और My लड़का भी house रोने was लगा। burnt, and the son also started तो अब crying. ये कहानी हमको ये So बताती है this कि वो जो story teaches us आसक्ति है वो that ये वह कि मन this की स्थिति है। attachment जब उसके मन में ये था कि is a मेरा state मकान of है, तो वो mind. रो पीट रहा था। When he's जब उसको बात निकल गई कि उसका मकान नहीं है, वो when he रोना was लगा, thinking it दूसरे was लोग his जो उसे home, then he was crying. When he तो came to know it was not his हाँ, anymore because it was sold, मतलब then पता he चला कि became नहीं ऐसा peaceful. नहीं हुआ, When he उसका again मकान came है। to know, no, the sale deal was तो इस प्रकार cancelled, से then सारी he again आसक्तियाँ started हमारी crying. जितनी भी हैं So similar वो in this मानसिक ही way, हैं। all our attachments are कुछ in भी the है जब mind तक only. हमारी आसक्ति So रहती है, भाई भाई में as long प्रेम as we रहता have है, आसक्ति रहती attachment, है, लेकिन there जब is वो लड़ाई हो attachment जाती between है brothers. But तो when there शत्रु हो is जाते हैं। fight, they become हुआ enemies. क्या है, But बाहर तो so कुछ now नहीं what होता has है, happened? उसका Nothing has भाई है तो changed भाई है, outside. उसको तो कोई बदल नहीं The सकता। brother is brother माँ only. बाप से Nobody जन्म can दिया change उन that दोनों ने, if, अब उसको because तो both कोई have been born from the बदल नहीं कर same सकता है। parents. Now nobody अगर can change जब that. तक वो एक दूसरे को प्रेम से भाई But मानते थे, भाई की तरह बर्ताव करते earlier थे, they तो were सब dealing ठीक with चलता each था। other as अब आपस में brothers, किसी, and अब now ज़्यादातर किसी संपत्ति को लेकर ही झगड़ा होता है, and generally मकान को the लेकर झगड़ा होता है। fighting is due to मन में property झगड़ा हो only. जाता है तो वो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बदलाव कहाँ पर हुआ है, मन में ही हुआ है ना। तो They इस are even प्रकार ready to kill जितने भी each other. संबंध हैं So all the change ये has केवल happened in the मानसिक mind भ्रम में ही only. है, So all these relations, they are only ये imagined in the वास्तविक mind. में कुछ भी नहीं है, They don't have ये any कल्पना reality. मात्र है।
They are just like imagination. And this imagination continues till we think that we will get some pleasure from this person, happiness from this person. As long as you think that you will get happiness from some person, or your desire will be satisfied, or you think there is a possibility of getting some profit benefit from this person, till then you maintain relation. When you become when you are convinced that I am not going to get any benefit or profit from this person, and he will not be able to satisfy any of my desire, then the relation is finished. This is the truth of all the relations. So all these relations, they are based on our desire only. You take any relation, it continues only as long as your desire gets satisfied by that person, or there is a possibility of the desire getting satisfied in future. If somebody is my relative and he or she is gets promoted to the position of some minister or some other big post, so then we maintain relation with that person, thinking that maybe sometime he may be of use to me. Earlier we might not have been much interested in that person, and if he or she came to your home, you might not have even talked to him properly. But now that he has become a big person, so you think that, oh, he is a big person, and you start claiming that, yeah, I am also related to this big person. So why do you do this? Because you think there is a possibility of your desire being satisfied from this person, or you may get some benefit from him in future. So in Vaisheshik Darshan, there is a sutra which says that if there is a relation, there is a cause behind that. When the cause will be lost, the relation will also be lost. And that cause is just our desire for happiness, nothing else. So this is why here it is said that such a person who is a karma yogi or a bhakta, he remains free from all this. It doesn't mean that he doesn't keep relation, but his relation is not based on some imagination, and rather he understands that we are all anshas of Bhagavan, and by will of Bhagavan we may have come together. So we stay together, and with this feeling he deals with others in a loving way, because this question comes up again and again, that then if these are the teachings in Gita, then why do we have to keep relations with parents or others? No, the current state, the current understanding of your relation is like a bubble. It can burst anytime. It is just imaginary. And we see in this world how relations get spoiled. It's nothing new about it. You hear such news daily. Nowadays this news is coming up regularly. Some wife killed the husband, or son killed the father. So many fights happen for property. So these are all imaginary, but our actual relation is via Bhagavan. That is the real relation. And as I had explained earlier, that there is some bondage due to previous debts, and you come together by Deva to clear those debts. So if you have this understanding, then there is no envy, jealousy, or competitiveness among the relation. So then the relation is having proper foundation. It is not imaginary, because we are anshas of Bhagavan. This is not an imagination. This is the truth. And if we maintain relations based on this foundation, then the relations will progress smoothly. And karma is done for yajna. By such a person, he does karma for yajna, means for Bhagavan. He offers to Bhagavan. He does karma for the pleasure of Bhagavan.
Yagya's one meaning of Yagya is Vishnu also, विष्णु हर जगह व्याप्त है, and Vishnu देश is विदेश में everywhere. विष्णु जो हर चीज में व्याप्त है उसी को One विष्णु who is बोलते हैं। spread everywhere, he is तो उन्हीं की Vishnu. दृष्टि, उन्हीं पर दृष्टि रख के, So उन्हीं की remaining प्रसन्नता के लिए focused वो on कर्म करते Vishnu, हैं। for तो his ऐसा pleasure भाव only, हमको रखना है। such a ये person सारा he भाव का works. ही खेल है। आप जो भी कर रहे हैं So this उसको is the आप bhava संपूर्ण that रूप we से should मैं have, करता हूँ, मैं and it करता is हूँ, all इस a game दृष्टि of से bhava करेंगे तो only. आप कर्म बंधन में फंसेंगे। और आप इस दृष्टि से करते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूँ और उनकी प्रसन्नता So के लिए मैं कर्म करता हूँ। अगर if मैं you work with the आध्यात्मिक understanding that you are servant of Bhagavan and you are working for his pleasure, और मैं if you कर्म have a करके family, करता ही your करता family जा रहा हूँ members are also और anshas मेरा of मूल Bhagavan, and उद्देश्य you are भगवान को fulfilling your प्रसन्न duty, करना है, भगवान and की your कृपा। primary goal is to तो satisfy वास्तव में Bhagavan, वही असली करता है, and वही he असली is the भोगता real है। doer, and he उनके is the लिए real कर्म सब कुछ controller, होता है। जब इस and दृष्टि से everything मैं is कर्म happening करूँ under his supervision only. So if तो we कहता work है with this कर्म के mentality, बंधन with में this मत फंसो, understanding, इसलिए कर्म से then we बंधन do not नहीं become है। bound by karma. तो ऐसा जो कर्मयोगी है वो So कर्म such a बंधन से karma मुक्त हो yogi, जाता है। he becomes free from और the जो bondage of इसके karma. विरुद्ध में And कर्म one करता है उसके who लिए works पहले तीसरे against अध्याय this में भगवान ने understanding कहा था in an यज्ञार्थम independent mindset, कर्मणो अन्यत्र for him कर्मण्येव Bhagavan had told अधिकार earlier कि जो यज्ञ को in the third छोड़कर chapter किसी और that one who लिए कर्म works for करता any है purpose other than तो वो yajna, कर्म बंधन में then बंधा हुआ है। he falls into तो ये bondage. कर्म विज्ञान का महत्वपूर्ण So श्लोक this है। this is a very important verse to सांस्कृतिक भी understand the अभी के science of जितने भी karma. श्लोक आए हैं उनमें ये All the verses सबसे that are महत्वपूर्ण श्लोक connected, है, क्योंकि that यहाँ are पर related बताया to गया है कि karma, कैसे उसका कर्म this जो is है one वो of the प्रबंधित most हो जाता है। important verses पुराना related to कर्म karma जो yoga. उसका समाप्त हो Here जाता it है, is said that how karma becomes dissolved. प्रारब्ध कर्म His जो है। और जो वर्तमान the कर्म है earlier उसका karma उसको is बंधन नहीं है। anyway lost, and कर्म whatever karma he is doing समग्रम currently, का मतलब है कि he will not पूरा get bound by that. 10% And here samagra means completely. उसका समाप्त होगा, बाकी All the बचा हुआ bondage will be lost, समग्रम will कर्म be ये है। cut off क्यों? completely. कारण क्या है कि What is the कर्म reason? को एक आधार चाहिए। What is the reason? Karma needs a foundation ये to जो कर्म exist. का जो संग्रह होता है This उसके लिए collection भगवान of कहते हैं karma, कर्ण for that कर्णम कर्म करते थी त्रिविधा कर्म संग्रह, कि कर्म जो Bhagavan says कर्म का जो that संग्रह होता है this वो तीन collection प्रकार से of होता है। karma, कर्ता it is होता of है, three types. एक One कर्म, is कर्म का karta, मतलब जिस पर one कार्य is किया जाता है, और karma, एक करण जिसके other is माध्यम से karan, आप by which the कार्य करते instrument हैं। by which we जैसे मान लो आप perform action. For example, खाना पकाते हैं suppose तो आप you करता है cook खाना food, पकाने के, so then और जो you are the सब्जियां doer, इत्यादि हैं and then वो there are उपादान कारण है। vegetables, they are the अग्नि upadan karan, they are the raw भट्ठ materials. लोई जो Then बर्तन there वगैरह हैं is वो करण है, fire, the और vessels, they are सब्जियां the जो हैं karan, the उनको कर्म instruments, कहेंगे, क्योंकि वो and the उनका उसका vegetable ही that धर्म is है cooked, that is उनकी the क्रिया की, karma, पचाने की क्रिया की। और that is the आप karma, करता है the result of और cooking, जिस माध्यम से and आप you are the पका रहे हैं वो doer, the करण है। karta, तो इन and the तीनों को instrument मिलके by which you कर्म are का cooking, संग्रह that is होता है। karan. So लेकिन इन तीनों में karma मुख्य कर्ता sangra है। is a collection of all the three, अगर कर्ता में but the कर्तृत्व karma का is the भाव main नहीं रहेगा person. If तो the कर्म doer करने doesn't की have the आशा sense नहीं of रहेगी। doership, क्योंकि then अगर the karma will उसमें not have any कर्तृत्व नहीं है basis. Because if the karta is तो not उसमें there, then कर्तृत्व भाव what समाप्त will हो जाता है किसी karma, व्यक्ति का, where, how will karma क्योंकि exist? उसका कर्म जो So वर्तमान में वो when कर्म कर the रहा है person, such a उसके person, लिए the karta, he loses the sense उसको of doership, बंधन then नहीं है। whatever karma he is पुराना वाला doing, it कर्म does जो है not वो create समाप्त हो bondage. जाता है। And the earlier तो karma, ये that कर्म का gets dissolved. विज्ञान भगवान ने So this is the इस श्लोक में science और of पिछले karma श्लोकों में बताया। that Bhagavan is अगले explaining श्लोक in में this वो verse and बताएंगे explained कि in ये the जो previous यज्ञ है ये verses. क्या है, In the next यज्ञार्थम verse, जो he will यज्ञ है explain what ये is यज्ञ क्या this है, इसको yajna. अगले श्लोक में बताएंगे। So what he will explain चलिए yajna in the यहीं next समाप्त verse. करते हैं। We will stop here for शुभोदय today, and शुभोदय। if you have any question, you can ask. बाबाजी प्रश्न है कि कोई बार बार आपकी बेइज्जती करे तो आपको Question: कब तक सहन करना चाहिए? भगवान ने if भी somebody सब is वाले ही insulting you continuously, how long should you तो आप भी 100 बार tolerate? सहन करो, Bhagavan आप तो also हैं, tolerated आप भी हैं, insult 100 times, लेकिन आपको ये not beyond मानना that. है कि आप इसे So सहन नहीं
you also tolerate 100 times, but you have to see if you cannot tolerate and you take revenge, then what will be the result of that? Bhagavan cut off Shishupal's head and nothing happened to him. But if you try to take revenge, then there is the state law also. Then you may get into trouble. So there may be some reason also behind why that person is insulting you. So there's some envy, jealousy, or you had done something to that person? So you should check that. प्रश्न है कि आपने बताया कि शिष्य को गुरु से द्वेष हो सकता है, तो कब और किस स्थिति में गुरु Next शिष्य को कह question, सकता है you कि said तुम that मेरे शिष्य नहीं हो? the disciple can have envy towards Guru. So when can a Guru say that you are no longer my disciple? So if the disciple is disrespecting, disobedient, a disciple means one who remains under discipline. So if he is not under discipline, then the Guru can say that now you are no longer my disciple, because now that relation has no meaning only. What is the use of that relation? The relation between Guru and Shishya is to that Guru will give spiritual knowledge to the disciple, and accordingly the disciple will do sadhana. So if he is not doing sadhana and doesn't desire to do sadhana, then the Guru may reject the disciple. अनुभव जी का प्रश्न है कि क्या Next question, द्वंद्व और can ईर्ष्या you के kindly मध्य explain भेद बता once सकते again हैं? the difference between Dvandva and Irsha? So answer, Dvandva means two, and two means those which are opposite to each other, like victory, defeat. Dvandva means the pair, but it is a pair of two opposites. And Irsha, jealousy only, not being able to tolerate others' progress, that is jealousy. You said that the mind goes toward the scarcity. So then, why is like that? Why is like that? Why the mind goes towards the scarcity? Although maybe we have everything, but still it goes. That is because of ignorance. Okay. So he thinks that if I get this, I'll be happy, and does not deliberate that in the past it has not worked like that. ठीक है. Thank you. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय
नमस्ते पंकजांघ्रे भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।